Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all my students are doing very well. This video lesson is for class 7 for subject of computer science. In this class we are going to start our unit number 4, that is Introduction to MSSS 2010. So let's start our today's lesson, that is about DBMS. What is DBMS? DBMS is Database Management System. So in this class we are going to discuss about Database Management System in detail. Whenever there is large amount of data and you want to organize that data, so how you can organize it? You have to write it down. It's really difficult to maintain data such way. Having a database make it very easy to organize any kind of data. In a database we have a structure in which data is broken down into smaller pieces. The information can be put into a database, can easily be accessible. So it's easy to maintain data with the help of database. Once you organize your data in database, you can easily retrieve data, you can easily edit data, and you can easily add any kind of information in database. So with the help of database you can organize large amount of data easily. That is not easy to organize in any other way. So dear students, when we talk about organizing large amount of data in the form of database, so definitely we need some specific software. So here we have a specific software that is designed specifically to organize that data in the form of database. This software is known as DBMS, that is Database Management System. So we can say Database Management System is a software or a set of programs using which the data retrieval, entry or edit of the data became easier. So with the help of this software you can easily edit, enter and retrieve any kind of data that you want. So some example of DBMS are MSSS, Oracle and SQL Server. There are several other ways to organize large amount of data, for example in the form of table or in the form of data sheet. So why we need DBMS? For specifically for organizing large amount of data. So here are some of the advantages that DBMS provide over other conventional method to organize that data. So our first main advantage that DBMS provide our table or data sheet is it avoid duplication of data and ensure that there is only one instance of a certain data. So the software ensure that there is no duplication of data. In real life it's usually not possible to check for the duplicate. So with the help of this software you can easily check is there any duplication in the data or identity is only entered once in database management system. So duplication of data is known as data redundancy. So DBMS provides a facility to reduce data duplication or data redundancy. When we use this database management system, when we have large amount of data, for example we have to maintain student record. स्पेसिफिकली अगर हम स्कूल सिस्टम की बात करें तो उसमें डेटाबेस जो होगा वो स्कूल के सब स्टूडेंट्स का होगा, जिसमें उस बच्चे का आईडी होगा, जो उसका रोल नंबर भी हो सकता है, उसका नेम होगा उस डेटाबेस में, उसकी क्लास मेंशन होगी उस डेटाबेस में और जिस उस टाइम पे वो एनरोल हुआ उस स्कूल में वो मेंशन हुआ होगा. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरह से उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो आपको ये होगा कि जो सिंगल डेटाबेस है वो मल्टीपल पीपल इजीली एक्सेस कर सकेंगे उसको एट द सेम टाइम, और वो इंश्योर करेगा कि जो डेटा सेम डेटा प्रेजेंट किया जाए टू ऑल यूजर्स को.
फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को उसका लॉगिन दिया जाता है और उस लॉगिन के थ्रू उस डेटाबेस में वो लॉगिन होकर अपना रिज़ल्ट चेक करता है, तो वो मेक श्योर किया जाएगा कि रिज़ल्ट सबको विजिबल होगी। जैसे क्लास 8 का स्टूडेंट अगर उसमें लॉगिन होकर अपना रिज़ल्ट देता है तो वो क्लास 8 के सब स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट देख सकेगा। सिमिलर वे अगर उसी सेक्शन का कोई और बच्चा उस डेटाबेस में लॉगिन होता है तो वो इंश्योर किया जाएगा कि सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल पीपल को एक्सेस हो और इंश्योर किया जाए कि वो सब का सब सेम डेटा प्रेजेंट हो ऑल यूजर्स के लिए। सो इस तरह से डेटाबेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी हो और डेटा अवेलेबल हो सबके लिए। सिमिलर वे अगर हम So database management system provide you another advantage. When you use a conventional method or basic method to store that data, for example, if you store a data in the form of table or in data sheet, we have to go through each entity to see or retrieve our required entity. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टेबल को यूज़ करते हुए स्कूल का डेटा मेंटेन किया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उस पूरे डेटा में से गो थ्रू होना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जिसका मुझे डेटा चाहिए उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं उसको शॉर्ट टाइम में उसको एक्सेस कर सकूं और उसको व्यू कर सकूं उस डेटा को। तो ये मैं कह सकती हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुझे एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक प्रोवाइड करता है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एसक्यूएल को यूज़ करते हुए उस डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मुझे स्टूडेंट विद द नेम ऑफ ए चाहिए, विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैं उस स्टूडेंट को सर्च कर सकती हूँ या उन सब स्टूडेंट्स को सर्च कर सकती हूँ जिनका नेम ए के साथ उस डेटाबेस में स्टोर है। तो जो नॉर्मल मेथड है डेटा स्टोरेज का, जैसे टेबल की फॉर्म में हुआ या डेटा शीट की फॉर्म में हुआ, वो डिफ़िकल्ट है उसमें और टाइम कंज्यूमिंग है। सो डेटाबेस उन सब में एफिशिएंट और इफेक्टिव मेथड है डेटा को स्टोर करने का, क्योंकि हम इजीली उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं लेस टाइम में। The DBMS, our four advantages, the DBMS can ensure different view for the different user of the database. This keep the confidentiality of the database safe. फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस की फॉर्म में अगर हमने उस डेटा को स्टोर किया है और हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के डेटा को जिसको मेंटेन किया गया है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है स्कूल का डेटाबेस की फॉर्म में। अब स्कूल के डेटाबेस में जो एडमिन को उसका व्यू दिखेगा वो और है, और जो पेरेंट्स को और जो स्टूडेंट्स को उसका व्यू दिखेगा डेफिनेटली वो और है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि एडमिन उसमें चेंजेस कर सकती है, उसमें और स्टूडेंट्स को ऐड कर सकती है, उसमें डिलीट भी कर सकती है, जबकि पेरेंट्स उसको सिंपली उस लॉगिन को यूज़ करते हुए उसको व्यू कर सकेंगे, उसको एसेस कर सकेंगे सिर्फ अपने बच्चे के डेटा को या किसी और उसको जिसकी स्पेसिफिक आईडी उनके पास है। तो हम कह सकते हैं डेटाबेस इंश्योर करता है हमें डिफरेंट व्यू फॉर द डिफरेंट यूज़र। So in our Microsoft Office suite we have MSSS. MSSS is a database management system. It can store data and execute various options on its data. Like first we have store data. With the help of Microsoft SS, we can easily store any kind of data. Secondly, we can search for data. So Microsoft SS provide you facility to search for the data. Thirdly, you can modify and delete any kind of data with the help of MSSS. Fourth, we have selectively retrieved data, that is known as query. Fifth, we have produce the report. You can easily produce any kind of report with the help of Microsoft SS. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड या उसकी रिपोर्ट को हमने प्रिंट करना है तो स्पेसिफिक रिपोर्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलर वे अगर ऑफिस का डेटा मेंटेन किया गया है, उसमें एम्प्लॉयज़ की कल सैलरी शीट को मेंटेन करना है और रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी की या कंपनी की प्रोडक्शन की या उसकी कितना उसने प्रोग्रेस किया विद इन ईयर, तो ये विद द हेल्प ऑफ MSSS ईजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। So dear student, here we have some basic concept of database that are going to help you. So let's start this. A database, among other things, contain table. As we know, table consists of row and column. In column, that is known as field in database management system, we organize
data. At the same time, in row we used to write down the entities that are related to that particular column. So data in the database is organized in these tables. The different row of the table are different instances of the data, and columns are subdivision inside each such data. Each column of the table contains the value of same type. When we discuss about the column, for example, we have a column that consists of serial number, so only serial number will be given in that column. Similarly, in name column we will write down only the names. The name may vary, but the field name will remain same. At the same time, in address column we will write down the address of each student. If we have another column that is related with the telephone, in this column we will write down the telephone number of each student. So we can say that each column of the table contains the same type of data or the same value. The same type here mean here that they are of specific category of data. So serial number contain only the same category of data. At the same time, name, address and telephone number, they will also have, they may vary from each other, but they contain the same category of the data or same value of the data. Okay. So let's discuss about different types of data. First type that we have over here is text. Text is used for text such as name or number on which no calculation will be made. For example, a telephone number or a person name that come under category of text data type. So it can store up to 225 characters. Our second data type is memo. This is used for lengthy text and numbers such as notes and description. It can store up to 65,536 characters. So second data type that we have is memo. So data that is in the form of text or number that is really lengthy, that come under the category of memo data type. Third category of data type is numbers. This contains numbers such as on which calculation is possible. So all numbers, for example, students' roll numbers will come under this number category. Fourthly, we have date and time. This is used for date and time. For example, if we have a database in which we are going to maintain a record of all the students that have paid their fees, so we will write down the date and specific month that are to maintain that database. So that date will come under the category of date and time database. Currency. This is used for currency values and to prevent the rounding off in calculation. For example, if we have a telephone directory in which we used to maintain all the record of all those people who have access to the phone and their specific phone numbers. On that directly we used to we can see their different names, their telephone number, at the same time we can see the home address. So the name will come under the category of text. Similar way, their phone numbers will also on which no calculation is made come under the category of text. The large description, that is their addresses and all that will come under the category of memo, and the date in which they have installed their phone will come under category of date and time. So that's all about different types of data that are used in database management system. To start Microsoft Office on your computer system, all you have to do is you have to click on Start button, click on All Programs. Then you have to do is you have to click on Microsoft Office, and from that Office suite click on Microsoft Access. So that's how easily you can open your Microsoft Access on your computer.
So students, I hope आपको clear understanding होगी what is database management system and where we use this database management system. So at the end there is a little assignment for you. All you have to do is you have to go to page number 60, part A, fill in the blanks that is given on this page. You have to solve it. At the same time you have to solve down all these exercises that are given at the end of unit on your copies. Do learn and memorize all these lessons. Thank you so much. Allah Hafiz.